है। काफी टाइम ये लोग बोलते हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स काफी टाइम नहीं बोलते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड हर एक फैमिलीज में ये क्वेश्चंस आते ही है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करना, और चैलेंजिंग है एज अ टाइप 1 फीमेल ये सब फेजेस में पास करना, स्कूल, कॉलेज, वेडिंग, प्रेगनेंसी एंड देन टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड एज वेल, जिसमें बहुत सारा नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज होना जरूरी है। और काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं क्लिनिक में भी, काफी टाइम हम लोग टैकल कर पाते हैं, काफी टाइम नहीं होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सो आज हम लोग ने सोचा है कि ये टॉपिक पे हम लोग डिटेल पे बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनुश्री मेहता। She's a diabetologist working with JDF from so many years and supporting majority of females in JDF going through the pregnancy. So for इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, एंड आई एम श्योर उनके पास बहुत सारा नॉलेज भी है हमारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने के लिए। और लिव्ड एक्सपीरियंस है हैना देसाई, हैना जैन हमारी, जो बचपन से जेडीएफ से जुड़ी हुई है। नाउ शी इज अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, हर चिल्ड्रन, टेकिंग केयर ऑफ हर करियर एंड हर फैमिली members. So she's an all-rounder. So welcome both of you. Thank you so much for taking out time today. आज का टॉपिक आई एम श्योर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और काफी सारा नॉलेज सबको मिलने वाला है। थैंक यू। सो ओवर टू यू डॉक्टर अनुश्री, ओवर टू यू डॉक्टर हैना। थैंक यू। Thanks, Vaishali Didi. Just quick question. Everybody is comfortable with Hindi और English के हिंदी सबको समझ में आती है अच्छे से यहाँ पर? आई सपोज हिंदी इंग्लिश, जेडीएफ का जो हमारा कल्चर Okay, है fine, वैसे ही। हाँ। fine. Okay. Dr. Anushri. Right. Good evening, everyone. Thank you, वैशाली। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी लड़कियां टीनेज या अर्ली 20s में आती है तभी हम थोड़ा सा काउंसलिंग क्लिनिक में कर पाए। पर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्लिनिक में हमसे जुड़ नहीं पाते हैं। So we thought this is a good platform to spread some awareness about the topic. And there are a lot of fears, there are a lot of anxieties related to this condition. And at the same time, you should also be aware कि क्या हेल्थ स्टेटस होना चाहिए और क्या हमारे गोल्स होने चाहिए। सो ये दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए हमने आज का ये डायलॉग डिजाइन किया है। So how we will proceed is that Henna will ask me a few questions and then I shall ask Henna a few questions. और आप लोगों के जो भी questions है आप प्लीज चैट बॉक्स में उसको लिखे। And after we finish our dialogue, we will open the forum और आपके जितने भी questions है उनको हम address करने का कोशिश करेंगे। Anything you would like to add, Henna? नो दैट्स इट। आप कोशिश करिए कि आपके जो क्वेश्चंस है, काफी सारे क्वेश्चंस हम जब भी हमारा जो डायलॉग होगा मेरा और डॉक्टर अनुश्री का, उसके दौरान ही आपके काफी सारे क्वेश्चंस आंसर होने वाले हैं। ओके, सो प्लीज एंश्योर कि आप वैसे क्वेश्चंस लिखे जो कवर नहीं हुए हैं शायद से हमारे डिस्कशन में। ठीक है, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम रहेगा। वी विल ट्राई टू क्लोज के 1 आवर में, रफली हम 40 मिनट्स टू 1 आवर में हम कंप्लीट कर पाएंगे। रिपीटेशन ना हो सेम चीज का। यस, करेक्ट। यस। Okay, so should I begin, Anushri, with the first few Yes. questions for you? Yes, Henna. Okay, so Yes. Dr. Anushri, as a doctor, can you tell us, as a person from the medical field, कि क्या ये सच है कि कोई भी औरत जिसे टाइप 1 डायबिटीज है, क्या वो कंसीव कर सकती है और डिलीवरी कर सकती है बेबी की सेफली? एंड इसमें क्या रिस्क होते हैं एज अ मदर विद टाइप 1 डायबिटीज? क्या रिस्क होते हैं बच्चे के लिए? Uh,
तो कोई भी फीमेल जिनको टाइप 1 डायबिटीज है वो डेफिनेटली कंसीव कर सकती है और डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो सकती है, डेफिनेटली अपनी नॉर्मल डिलीवरी भी एक्सपेक्ट कर सकती है इफ एवरीथिंग गोज वेल. ओके, बट यू डू हैव टू मैनेज योर डायबिटीज. प्रॉब्लम सिर्फ तभी आ सकती है अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशंस हो या अगर आपकी डायबिटीज अच्छे से मैनेज ना हुई हो. तो अगर बिफोर कंसेप्शन ही आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो जब भी जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, वो पीरियड में बच्चे का डेवलपमेंट होता है. तो अगर वो पीरियड में आपकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड है तो बच्चे का डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है. उसको कंजेनाइटल अनोमलीज आ सकती है, तो हार्ट की रिलेटेड अनोमलीज आ सकती है, स्पाइन के रिलेटेड अनोमलीज आ सकती हैं. ठीक है, बट वी आर इन एन एज वेयर साइंस बहुत एडवांस हो चुका है एंड a lot of screening is done, anomaly scan, repeated ultrasounds, और बहुत सारी testing is available nowadays to diagnose if the child has any problem, right? So whatever decision at the time can be taken. Okay, so it is very important that you're in constant touch with your gynecologist, you're in constant touch with your diabetes doctor to manage your sugars. The other and one of the biggest risks of diabetes during pregnancy or pre-existing diabetes with pregnancy is कि बच्चे का size बड़ा हो सकता है. So you can have an abnormally large baby, especially if the sugars are high, and if the baby is high in weight or is abnormally large in size, तो वो डिलीवरी के टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है. So it becomes very difficult to do a normal delivery in such a case. And the baby also, because he has a higher birth weight at delivery, उसका भी फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है. बट दैट इज टाइप 2 डायबिटीज, ओके, नॉट टाइप 1. सो these are the मोटा मोटा risk factors that the child can face, and all of them are related to the fact that if the blood sugar is uncontrolled, तो ही ये सब होता है. If the blood sugar is under good control, we have so many live examples that the child is absolutely normal और कोई भी problem नहीं होती. Okay. A lot of questions, a lot of people have a question कि मदर को डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होने का रिस्क कितना है. तो ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि सिर्फ मदर नहीं डिसाइड करती है, बोथ द पेरेंट्स रिस्क डिसाइड करते हैं. So if only the mother has type 1 diabetes, the risk is very small, around say 3%. If both the mother and the father, both of them have type 1 diabetes, then the risk is a little higher. It can range from 15 to 30%. On an average, there is a 15% risk. And if only the father has type 1 diabetes, then the risk can vary from 5 to 7%. Okay. So there is a 95% chance that the child will not get type 1 diabetes in the future. Um, what is very important is that the mother is also at higher risk of pregnancy related issues like blood pressure, or if she gains too much weight during pregnancy. So there are certain pregnancy related complications also which are not very specific to diabetes, पर उनका भी थोड़ा सा risk बढ़ जाता है. So you have to monitor your blood pressure, you have to monitor your diet, and most of the times we recommend to all our patients कि आप CGM लगा लो pregnancy में. Or many a times we do change insulins also for the patient during pregnancy. But it is, those 9 months have to be very, very rigorous as far as monitoring is concerned, because you can expect a normal pregnancy if your sugars remain normal. I think I've covered everything. Anything you think I've missed out, Anna? No, not really. I think what the gist of what you said is कि डरना नहीं है प्रेगनेंसी के लिए. With well managed sugars, like other aspects of life, जैसे आपका करियर हो गया है, आप कितना
आपकी लॉन्जिविटी क्या है, लाइफ की क्वालिटी क्या है, काफी सारी चीजें जो हम डरते हैं टाइप 1 डायबिटीज के साथ, अगर वेल मैनेज रहती है अपनी ब्लड शुगर्स, तो यू कैन अचीव एवरीथिंग इंक्लूडिंग अ हेल्थी प्रेगनेंसी ऑल्सो. दैट्स व्हाट आई So one अंडरस्टैंड. one thing I would like to add is कि आप कंसीव करते हैं उसके पहले की आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कंसीव करने के पहले ही आपको हर अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स है, तो कंसीव करने के बाद भी वो प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. सो योर हेल्थ एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी शुगर्स पहले से ही अच्छे कंट्रोल में है, तो एज आई सेड द फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी स्मूथ सेलिंग, एंड दोज 3 मंथ्स आर जब भी आपका बच्चा डेवलप हो रहा है और तभी आपकी शुगर्स ऑलरेडी अच्छी चल रही है, तो यू विल नॉट हैव दैट मच ऑफ एन इशू. Your risk of getting problems later on or complications later on also will be much lesser. ओके, ओके. Right. All right. So before हम कंसेप्शन के पहले जब भी हम प्लानिंग करते हैं, राइट, अभी इन टूडेज टाइम्स पीपल एवरीबडी प्रेफर्स टू नाउ प्लान इन एडवांस. फैमिली प्लानिंग भी, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस वी प्लान मच बिफोर के, ओके, Yes. 2 years लेटर शादी होने के बाद या 3 years लेटर हमें बच्चे की प्लानिंग करनी है. तो ये प्लानिंग करते समय फैमिली आपके स्पाउस के साथ क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए बिफोर यू इवन थिंक अबाउट कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी एंड हैविंग अ चाइल्ड? Okay. So we will start with complications and then go back from there. And I'll probably end with basic lifestyle. Fine. So सबसे पहले there are two complications of type 1 diabetes. एक है retinopathy और दूसरा है माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया. आई एम श्योर अगर आप लोग जेडीएफ से जुड़े हैं तो आप एन्युअली अपना माइक्रोएल और रेटाइना चेक कराते हैं. Now, if you have pre-existing microalbuminuria or you have any kind of pre-existing retinopathy, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज अ रिस्क कि ये प्रोग्रेस हो सकता है. ओके. लॉन्ग टर्म में लाइक एंड रिजल्ट पे उसका फर्क नहीं पड़ता है. सो फॉर एग्जाम्पल you're not going to become blind because retinopathy during pregnancy. Please mute yourself, whoever Xiaomi is. Please mute yourself. Right. So, what was I saying? Right. So, long term outcome पे उसका असर नहीं होगा, but at temporarily it does matter, and temporarily the retinopathy during pregnancy can progress. Okay, that's one. Second is if you have microalbuminuria, the microalbuminuria can also progress during pregnancy. It will not have an impact on eventual outcome कि eventually अगर किडनी खराब होती है तो उसके वजह से नहीं होगा, but it does progress. So I'll just give you an example of why this is very important. अगर आपको suppose moderate retinopathy है, ठीक है, माइल्ड है तो प्रॉब्लम नहीं है, मॉडरेट रेटिनोपैथी है और आप प्रेग्नेंट हो गए और प्रेगनेंसी में रेटिनोपैथी प्रोग्रेस हो गई, तो मॉडरेट से सीवियर के स्टेज में जा सकती है. और जब रेटिनोपैथी सीवियर स्टेज में जाती है तभी आई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकता है, आपको शायद प्रेगनेंसी के टाइम लेजर कराना पड़े. ओके, सो दैट इज वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. Second is if you have microalbuminuria which is probably in stage 2, तो प्रेगनेंसी में it may progress to stage 3. So if you're married, you're thinking that in the next 2-3 years I want to conceive, then I would advise that right now if you're in stage 1 or stage 2 of retinopathy or microalbuminuria, you have time. Work on your sugars, work with your doctor, and try to reverse these complications before you conceive so that your pregnancy is smooth sailing. So this is very, very important. And a lot of people unfortunately do miss out on it. So that's one. Second, if you have any kind of a lifestyle issue, जैसे आपको माइल्ड ब्लड प्रेशर है या माइल्ड कोलेस्ट्रॉल है, तो प्रेगनेंसी के दौरान we cannot give you, we have restriction on the kind of on the amount of medications or the kind of medications that you can take. So these 2-3 years you can
try to work on your lifestyle and try to be on minimum medication for these particular problems, if at all you are at a stage where you require medications. Third, if your sugars are uncontrolled, generally, if you go to any gynecologist, तो वो लोग हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि आपका HbA1c 6 होना चाहिए, which we know it is very difficult for a person with type 1 diabetes. So हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट आपका HbA1c 7 के अंदर रखने का कोशिश करो. So try to take this time and try to keep your HbA1c below 7. Okay? क्योंकि as I mentioned before कि at the time of conception आपकी जो health है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आगे का आपका प्रेगनेंसी का जर्नी भी डिसाइड करता है. एंड लास्ट इज वेट. अ लॉट ऑफ अस विमेन, शादी के बाद अ लॉट ऑफ विमेन टेंड टू गेन वेट. So it is very important that if at all you've gained a little weight, you have a year's time. You try to lose weight so that you come to as close to your optimum weight as possible, because that is very important for your insulin requirement and for a healthy pregnancy. Okay. So as I mentioned, you need to make sure you don't have any complications. Try to reverse retinopathy or microalbuminuria if you've at all developed them. Try to keep your HbA1c below 7. Try to maintain an optimal weight. If you have any other lifestyle related issue like blood pressure or cholesterol, try to make changes in your lifestyle so as to manage those, if possible, without medication. Yes, that's it. And your hemoglobin levels should be maintained. Right. Okay, thanks for that, Anushree. So since you mentioned HbA1c and blood sugar targets जो है, uh, before pregnancy, of course, like you said, 7 and below is more realistic. 6 may be very, very hard to get, right? And I have experienced it. I know. During the pregnancy, actual pregnancy, what kind of targets should a woman with type 1 diabetes aim at? HbA1c bhi, and of course day-to-day blood sugars and time in range as well. So during pregnancy, हम लोग हमारे जो अदरवाइज के टारगेट्स है ना वो बहुत टाइट हो जाते हैं. नाउ आई अंडरस्टैंड कि 100% ऑफ द टाइम हम लोग टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं. सो वी हैव टू ट्राई कि जितना हो सके उतना वी अचीव द टारगेट्स दैट वी आर सपोज टू अचीव. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, your fasting blood sugar should ideally be less than 95, if possible, as far as possible, less than 100. Okay. Your post meal, that is your post 2 hours post meal sugar, should be less than 120, or your 1 hour post meal sugar should be less than 140. That is how tight the target is. The HbA1c target is 6. Okay. And if we talk about CGMS, if we talk about time in range, so again, the time in range target is much tighter as compared to in a non-pregnant state. So we expect, so the cutoff changes, the time in range now becomes 60 to 140. Okay, तो अभी जब आप CGM लगाते हैं तो आपका टारगेट रेंज जो है वो चेंज होता है. हम 60 to 140 का टारगेट रेंज सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को. बट आई डू अंडरस्टैंड कि ये टारगेट्स अचीव करना फॉर अ पर्सन विद टाइप 1 डायबिटीज इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एट द सेम टाइम हमको हाइपोग्लाइसीमिया भी अवॉइड करना है. तो हम मोटा मोटा टारगेट देते हैं. इवन इफ यू आर एबल टू कीप योर फास्टिंग around 100, and if you're able to keep your post meals below 140 or below 150, we are happy with that. So what you need to understand is कि प्रेगनेंसी में इंसुलिन के साथ your diet also plays a very big role in helping to achieve these target blood sugars. I'm sure Henna will be able to give you an experiential uh, advice on that. But you have to work with with a nutritionist as well, because a lot of times when we manage diabetes during pregnancy, it is more about splitting the meals so that you don't get spikes in one go. So so be open to taking as many injections as you need to.
and be open to splitting your meals so that you get a smooth graph and you are able to achieve the targets. Okay. Uh, you have to understand that the first 3 months, generally, the insulin requirement doesn't increase. And the first 3 months generally is managed the way you would be in your pre-pregnant state. As the second trimester sets in, your insulin requirements increase and you have to address the increase. They can go to as high as 3 times the non-pregnant levels. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर हर वीक से थोड़ा थोड़ा आपका इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है. सो डोंट शाय ऑफ और डोंट वेट टू यू डोंट हैव दैट मच टाइम. तो फटाफट से आपको रिक्वायरमेंट्स बढ़ाते जानी है. इनफैक्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाती है रिक्वायरमेंट्स, स्पेशली योर प्रैंडियल इंसुलिन, स्पेशली योर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ जाती है. ओके. सो बिना झिझके, बिना डरे, यू इंक्रीज योर इंसुलिन. ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही इंसुलिन लेना है, कि इतना इंसुलिन लेना है. जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतना आपको इंसुलिन लेना है. ओके. अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो यू शुड वॉक, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So take permission from your gynac and try to walk after meals to prevent the spike, to bring the spike down. It is one of the best ways to manage your blood sugars, along with, of course, whatever dietary changes that you need to do. So we advise a lot of people कि breakfast को आप split कर दो. Maybe have half breakfast, say in early morning, half breakfast later on. Similarly, if आपको लंच में आप 2 चपाती खाते उससे स्पाइक आ रही है तो एक ही चपाती लो and maybe have another chapati after 2 hours. Okay, so one of the medically indicated ways to manage sugars during pregnancy is to split your meals. Okay, make sure you're taking good amount of protein because you don't want too much hypoglycemia. That is not good for the child also. Well, excessive, like that every day you are having 3-4 hypos. ऐसा हमको नहीं चाहिए. Occasionally hypo तो होने ही वाला है because we are really trying to achieve very tight blood sugar control. Uh, you need to get your BP monitored regularly. Of course, gynecologist करेंगे monitor, और अगर उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी तो आपको लेनी, whatever they will manage that. Delivery के time, what you need to know is के most of the time the hospital where you get admitted for your delivery, they are the ones who are supposed to take care of your sugars. Okay. So generally during delivery, most of the time patient को वो लोग IV insulin drip लगाते हैं. And the moment you deliver your baby, so I'm sure you all know कि baby deliver होता है, उसके बाद placenta deliver होता है. So the moment the placenta is delivered, आपकी insulin requirements will really drop significantly to almost, to even lesser than your pre-pregnant levels. So then you have to only monitor and give insulin as and when based on your blood sugar levels. But during delivery, try to keep your sugars below 200 if at all ऐसा है कि you are managing your sugars. Try to keep your sugar below 200. It's okay अगर वो थोड़ा सा 180 या 160 जा रहा है, that's fine. आपका कट ऑफ है कि मैं 200 के अंदर रखूं, क्योंकि 200 के ऊपर जब जाता है तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है. एंड दैट इज द ओनली थिंग वी आर वरीड अबाउट ड्यूरिंग दैट पीरियड. एंड so your fasting should ideally be less than 95. Around 100 is okay. Post meal 2 hours should be less than 120. 1 hour should be less than 140. HbA1c less than 6. Your time and range cutoff changes to 60 to 140, not 80 to 170, 80 to 180 or 70 to 180. Sorry. During delivery, try to keep your sugar less than 200. As soon as your placenta gets delivered, your insulin requirements will drop significantly. So you may cut off insulin supply and just give insulin depending on the blood sugar level. And one more thing that I was to add. You can cover breastfeeding maybe. Breastfeeding may, what kind of blood sugars
we should aim at? So breastfeeding is like a normal non-pregnant state. So what our usual cutoffs are, say fasting 70 to 130 and post meal less than 160 or maybe 180. So breastfeeding is a very challenging time for a Mm. woman with type 1 diabetes because every time you feed, your sugar drops. So, but I think Hannah, you will be a better person Mm. to Sure. talk about this based on your experience because there is no Mm. medical guidelines for this. Yes. It's just Okay. Okay. Sure. right. All right. Okay. Uh, So okay. we'll go to the next question. प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड शुगर काफी कंट्रोल मतलब कंट्रोल में नहीं है, ये रेंज के बाहर जा रही है जो आपने अभी बताई है, तो ग्रोइंग बेबी के लिए क्या रिस्क हो सकते हैं? राइट, सो ये आई थिंक मैंने ऑलरेडी बोला है कि हम्म, पर फिर भी वील जस्ट रिपीट इट कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, सो एज आई मेंशन्ड कि द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी डेवलप होता है, और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुगर कंट्रोल में नहीं है तो कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है, हार्ट की, स्पाइन की। और अगर उसके बाद भी सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में शुगर्स अनकंट्रोल्ड है तो बेबी का साइज बड़ा हो सकता है, इट्स कॉल्ड एज मैक्रोसोमिया और अ लार्ज बेबी। सो इफ द बेबी इज लार्ज इन साइज एट बर्थ, मोर देन आई थिंक 4 kgs, तो एक तो डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इट कैन बी एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी। सेकेंड इज आजकल तो आई थिंक सारे पेशेंट्स को लोग सी सेक्शन कर लेते हैं बिकॉज वी हैव गुड सोनोग्राफी, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सेकेंड इज कि आपको डिलीवरी भी प्री मेच्योर हो सकती है, सो डिलीवरी के abnormalities आ सकते हैं। तो इफ यू गेट अ प्री मेच्योर लेबर सेटिंग हो गया and the baby has not developed fully, the baby's lungs have not developed fully, so that can be an issue कि फिर they might have to first make sure that the lungs are mature, or they might have to keep the baby in the NICU, and those kind of things can happen. फिर दूसरा है post delivery, the baby can go into hypoglycemia. So generally most hospitals have a protocol in place for that, and they do check the blood sugar of the baby and manage it accordingly. Okay. Uh, if the baby is large in size, okay, or if it's a large birth weight baby, तो आगे चल के बच्चे में टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा हो सकता है इन हिज फ्यूचर। Okay. So finally, some families जिनको कंसेप्शन के लिए दिक्कत आ रही है कंसीव करने में, सो मेनी पीपल एंड अप ऑप्टिंग फॉर आईवीएफ प्रोसीजर। तो उसमें इफ देर इज अ टाइप 1 डायबिटिक वुमेन हु वांट्स टू गो फॉर समथिंग एंड कंसेप्शन अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है कोई कारण से, इट कुड बी एनीथिंग, most times it's not known. So, what kind of precautions, what kind of care they should take before going for such a procedure? So I think whenever we talk about type 1 diabetes, we always say कि शुगर तो आपका अच्छा होना चाहिए. But what I want to clarify is that a person with type 1 diabetes can go in for an IVF, and they can have a successful IVF. We have seen IVF, we've seen many patients go for IVF and achieve positive results with that. So type 1 diabetes is not a contraindication to IVF. That's one. Second is many times type 1 diabetes के साथ thyroid के issues आते हैं. So if your thyroid is uncontrolled, तो आपको conception में problems आ सकती है. So before going in for any kind of an IVF, you have to make sure that your thyroid is under control so that your cycles are, your ovulation is normal and your conception, मतलब conception फिर हो सकता है if the thyroid is uncontrolled और उसको आप कंट्रोल में लाए तो। थर्ड इज कि आईवीएफ में ऑफन हार्मोनल थेरेपी देते हैं,
एंड हार्मोनल थेरेपी के टाइम स्पेशली इनिशियली शुगर्स बहुत ही फ्लक्चुएट करती है और बॉडी में बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है. So again, your insulin requirements will go up. And again, managing your diet is extremely important at such times. Okay, because you become, because of the progesterone, you become very insulin resistant. And अब कितना भी इंसुलिन देंगे आपको लगेगा पानी ही जा रहा है, इंसुलिन तो जा ही नहीं रहा है. तो तभी डाइट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तभी आप डाइट से आपका शुगर मैनेज कर सकते हैं. Okay, so if your sugars are well managed, तो आईवीएफ के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं. ओके. एंड अगेन आईवीएफ में विद योर डॉक्टर्स परमिशन ट्राई टू कंटिन्यू सम काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू काउंटर insulin resistance at that time. Yeah, I think that's it about IVF. All right. Okay, so do you want to now move the conversation, Yes. flip side, lived experience? Yeah. Yes. Okay, so I gave a lot of medical gyan. Okay, let's hear it from the horse's mouth. I'll just pin you. Okay. So Henna, you had two babies. Matlab, people are scared of having one, and gone ahead, and you've had two, and not twins up. You Yeah, have two one children. after the So other. how did you? Yeah. So how did you manage the stress? Of managing your sugars and the stress of course, you do see high sugars during pregnancy. It's not that you don't. So how did you manage the stress and the anxiety of seeing those sugars, the fluctuations, and how it'll harm your baby? Yeah. So one of the things for I feel managing stress, and for me हमेशा से ये work करते आया है, and probably because I'm a type 1 diabetic, maybe because of that, it is a habit for me कि मैं ना खुद को educated रखती हूँ. I like to know before I jump into anything. सो प्रेगनेंसी होने के बाद मुझे सब कुछ नहीं सीखना है, मुझे पहले से सीख के लेना है कि प्रेगनेंसी में एज अ टाइप 1 डायबिटिक मैं क्या एंटिसिपेट कर सकती हूँ. कई प्रेग्नेंट जो टाइप 1 डायबिटिक्स को मैं जानती हूँ, इनिशियली दे हैव कम टू मी सेइंग दैट अरे मेरी शुगर्स बहुत बढ़ रही है, मैं 4th मंथ में हूँ, पहले तो नहीं होता था, अभी मेरी शुगर बढ़ते ही जा रही है. सो दे आर लाइक ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि अचानक से शुगर्स कैसे बढ़ रही है. बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट देयर इज नॉट इनफ नॉलेज बिफोर हैंड, बिफोर द प्रेगनेंसी बिगिंस, कि ये सब होने वाला है. ओके, शुगर्स बढ़ने वाली है, आपको इंसुलिन की जो मात्रा है आप ले रहे हो वो भी बढ़ने वाली है, आपके डोजेस बढ़ने वाले हैं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस करने वाले हो. सो आई फील के बिफोर हैंड अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो अच्छे से अगर आप सीख के ले रहे हो, आप खुद को एडुकेटेड रख रहे हो कि प्रेगनेंसी में क्या एंटिसिपेट करना है, डिलीवरी में क्या होने वाला है, एंड पोस्टपार्टम फेज में क्या होने वाला है, दैट इटसेल्फ आपका काफी स्ट्रेस उसमें कम हो जाता है. दैट इज वन थिंग. Other than that, I think, like any mother or mother to be, not just a type 1 diabetic, but anybody, जो टेंशन आता है, simple methods like breathing techniques हो गया, going for a walk, doing low resistance exercises, they make you, they keep you happy and what do you say, glowing through the pregnancy as well. But most important, like I said, knowing everything beforehand. Anticipation is very important in managing a very smooth pregnancy and uske baad ke phases bhi. That is Right. that is I would say is the key to it. Uh, a few ways to do, keep yourself in the know कि क्या होने वाला है. मैंने एक बहुत अच्छी बुक रीड की थी. मैंने थोड़ी मतलब जस्ट प्रेग्नेंट हुई थी तभी मैंने मंगवाई थी. वो इंडिया में नहीं मिलती है बुक, आई डोंट नो अभी मिलती है कि नहीं, बट ये बुक है कि प्रेगनेंसी विद टाइप 1 डायबिटीज. ये जिंजर वेरा करके, देर इज अ वेरी वेल नोन टाइप 1 डायबिटिक इन द यूएस, जिसने ये बुक लिखी है. उसकी भी 2 प्रेगनेंसीज शी हैज गॉन थ्रू. वो बुक उसने ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर एकदम ब्रेक डाउन करके
क्या एग्जैक्टली होता है, उसका खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस उसने लिखा है वहां पर। वो बुक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। मैंने आई डोंट रिमेम्बर अभी मैंने किसी और मदर को पास ऑन की है, बट दैट Yeah, वाज वेरी इंपॉर्टेंट। I don't think it's available in India. यस एग्जैक्टली, बट वो अगर बुक अगर मंगवा सकते हैं तो इट इज वेरी यूजफुल। सेकेंडली, जब भी मैं प्रेग्नेंट थी फर्स्ट टाइम, माय फर्स्ट बेबी, मेरे साथ और जेडीएफ के दो तीन लड़कियां भी थी, देवर ऑल्सो प्रेग्नेंट। सो हमने एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया था। ओके, और वो तीन चार लोगों का ग्रुप जो हमारा था, इट वाज फॉर इमोशनल मेंटल सपोर्ट, बिकॉज हम लोग सब सिमिलर बोट में थे, सेम ट्राइमेस्टर में थे, आगे पीछे थे थोड़े। सो वो कम्युनिटी हमने हमने बनाते बनाते अभी देर आर अबाउट 40 to 50 विमेन। ओके, ये 6 साल पुरानी बात है। और उसमें और औरतें ऐड होती गई है, उनको हमने सबने सपोर्ट किया है। हम तो ऑफ कोर्स 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी, इट फील्स अ लॉट, इट फील्स के अरे 9 मंथ्स क्या होगा, बट वो 9 मंथ्स कहाँ निकल गए, अभी 6 साल निकल गए, उस बात को। सो वी आर कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट अदर विमेन लाइक दैट। तो आई थिंक बीइंग पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, ऐसे निश एकदम बहुत ही निश कम्युनिटी, जो विमेन जो प्रेग्नेंट है विद टाइप 1 डायबिटीज, तो अगर आप पार्ट बन सके तो दैट इज वेरी 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 यूजफुल हमारे लिए, बहुत बहुत मेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, बिकॉज वी वर ऑल गोइंग थ्रू द सेम जर्नी एट द सेम टाइम। या So if anybody wants to be a part, they can always reach out to Henna. She'll add you to the WhatsApp. या श्योर। Okay. Now you asked me what the doctor is supposed to, what are the targets and all, but how did you manage during delivery and during the hospital stay? How did you manage your sugars? या सो आपने जैसे बताया कि द हॉस्पिटल टेक्स ओवर द ब्लड शुगर मैनेजमेंट। इन माय केस ऐसा हुआ था कि मैंने मेरा जो गायनेकोलॉजिस्ट जो थे, he already had experience, prior experience with type 1 diabetics. Of course वो गायनेकोलॉजिस्ट, फॉर मी इट वाज इम्पोर्टेंट कि मेरे एरिया में वो रहे, वो ऐसे हॉस्पिटल या ऐसे नर्सिंग होम के साथ एसोसिएटेड हो जो मेरे पास में रहे, सो आई कैन रीच आउट टू हिम एनी टाइम। तो उनको मैंने पहले से ही आई गेव हिम द कॉन्फिडेंस कि मैं जो मैनेज कर रही हूँ, आई एम वेल अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इन टच विद माय एडुकेटर, विद माय डॉक्टर, माय डायबिटीज डॉक्टर। ओके, एंड मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ मेरे डायबिटीज मैनेजमेंट में। एंड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑल्सो, बोथ माई डिलीवरीज वर डन बाय द सेम गायनेकोलॉजिस्ट। आई वॉज हॉस्पिटल में एडमिशन वगैरह लेकर मैंने बहुत क्लियरली उनको पहले से ही बता के रखा था कि मेरा जो डायबिटीज मैनेजमेंट होगा वो मैं खुद मैनेज करूंगी। I we I could not have a chance to wait for labor pains to begin. मुझे सी सेक्शन के लिए जाना पड़ा। आई वेंट फॉर इलेक्टिव सी सेक्शन इन द फर्स्ट टाइम, बिकॉज मुझे थोड़ा बेबी का वेट थोड़ा ज्यादा हो गया था एंड में मेरी हाइट भी कम है, तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि फॉर यू टू वेट फॉर लेबर्स एंड एवरीथिंग इट विल बिकम थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो 10 दिन पहले मुझे थोड़ा ब्रेथलेसनेस होने लगा था। द बेबीज वेट वॉज सो मच एंड आई वॉज फीलिंग द प्रेशर एवरीवेयर। तो 10 दिन बिफोर माई डिलीवरी मैं तो जाके आई एडमिटेड माई सेल्फ इन द हॉस्पिटल and I explained to the doctor. The doctor wanted to, of course, gynecologist wanted to send me home and everything. He wanted me to wait till the end, but मेरे लिए डिफिकल्ट होते जा रहा था। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं मेरा जो डायबिटीज मैनेजमेंट है मैं खुद करूंगी। ऑफ कोर्स हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल ये था कि वो मेरा ब्लड शुगर जो रीडिंग है दे विल चेक इट देम सेल्व्स ऑल्सो, एंड वो लोग उनके भी रिकॉर्ड्स में लिखने वाले हैं, तो आई लेट देम डू दैट। बट माई मैनेजमेंट ऑफ द ब्लड शुगर्स, मेरा पंप, आई वॉज ऑन पंप थ्रू आउट माई बोथ माई प्रेगनेंसीज, तो वो मैंने मेरे पास ही रखा। इवन ड्यूरिंग द सी सेक्शन, उस टाइम पे सी सेक्शन के टाइम पे यू आर, इफ इट इज अ प्लान्ड सी सेक्शन, you are awake the whole time, right? You can control your pump yourself, and that's what I did during my delivery. तो मेरा मैनेजमेंट मैंने खुद किया, बट रिमेंबर ये केस टू केस बेसिस है। किसी का अनप्लान्ड सी सेक्शन भी हो सकता है, किसी का नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है, हर केस डिफरेंट है। ओके,
So it is important to have that dialogue with your gynecologist continuously. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जब भी सी सेक्शन होता है, अगर प्लान्ड सी सेक्शन है, तो आपके साथ एक एनेस्थीशियोलॉजिस्ट भी रहते हैं. तो वो नॉर्मली आपको ब्लड शुगर मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि होती रहनी चाहिए. आप एडमिट हो रहे हो हॉस्पिटल में, बात करते रहो आपके टीम के साथ. ओके. एंड गिव देम द कॉन्फिडेंस. इफ आपको मैनेज करना है, अगर आप किसी और को मैनेज करने दे रहे हो, तो देन यू हैव टू लीव इट टू देम. फिर आप उसमें नोकझोंक नहीं कर सकते हो. बट ड्यूरिंग डिलीवरी एवरीथिंग वेंट स्मूथ. कोई मैंने ऐसे स्पाइक्स वगैरह कुछ देखे नहीं डिलीवरी के दौरान. डिलीवरी होते ही ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर दिया गया था फॉर बोथ माई डिलीवरीज. तो आई न्यू के ब्लड शुगर्स अभी ड्रॉप होने वाले हैं. तो मैंने क्विकली मेरे पंप के सेटिंग्स भी चेंज करना शुरू कर दिए थे एज सुन एज आई डिलीवर्ड. तो उसके सेटिंग्स जो बेसल डोजेस है, लाइक यू सेड प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली एक्सपेक्ट टू सी ड्रॉप इन योर ब्लड शुगर्स. तो उस समय में मैंने फटाफट मेरे इंसुलिन पंप में चेंजेस लाने शुरू कर दिए थे. इफ यू आर ऑन इंसुलिन इंजेक्शंस, आप सिमिलर तरह से मैनेज कर सकते हो. As long as you have planned for it in advance, and you have planned with your team also जो hospital में है. So a lot of hospitals do prefer to give IV insulin rather than allowing the patient to manage on their own. So that is, as Henna mentioned, as a dialogue to be between you and your doctor as to, and it's good to have this planning done in advance. That how is the sugar management going to happen during delivery? It does help, in a lot of patients from JDF do that. And I know they've come and discussed with me in the clinic, and then that's what they've done during their delivery. So I think that's a very good point that you brought out about having that dialogue the with your doctor in advance. Very, Yes. very important. Mhm. Okay. So how did you manage during breastfeeding in the postpartum phase? How did you manage sugars, breastfeeding, Yeah. and as a new T1D mother coping with her type 1 diabetes and a new baby? Yeah. So in after both my deliveries, I started breastfeeding my children. So breastfeeding, honestly, it is considered like a mini marathon. Okay, because after every session you are dropping low like nobody's business. Okay, it's very hard. मैंने of course अभी मैंने बुक में तो पढ़ा था कि हाँ लो जाएगा, बट इतना लो जाएगा, इतना ड्रॉप होगी शुगर्स, आई डिड नॉट एंटिसिपेट. And honestly, even a person without type 1 diabetes, when they breastfeed, they start losing lot of weight. All the postpartum weight goes off. That's They supposed to also, happen. yes, exactly, because your That's body physiology. burns calories Yes. at that time. So you are going to experience things as if आपने कोई exercise की है. Okay. So I have experienced, I went through all of that. I used to keep hypo snacks next to my bed. मैं कभी ऐसे नहीं करती हूँ. मैं hypo snacks कभी नहीं रखती हूँ. Snacks kitchen में रहते हैं. Sugar मेरे पास रहती है हमेशा, मेरे बाजू में रहती है. But snacks as such, it's in the kitchen. But for the first time in my life, I had to keep food next to me, because leaving a small baby and running off to the kitchen, it is not viable when you are just come back with a baby from the hospital. So बहुत सारे hypo snacks मेरे पास हमेशा रहते थे. In terms of मेरा तो I would say blood sugars were dropping low a lot, and accordingly मुझे मेरे doses भी बहुत rapidly change करते जाने पड़े. बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज कि ये शुरू शुरू में होता है, देन थोड़ा प्लेटो आने लगता है. ओके, फेजेस में आने लगता है. सो इस समय में आपको सीजीएम का यूज करना बहुत जरूरी है. ओके, समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि आपने ज्यादा हाइपो स्नैक खा लिया है और आपका स्पाइक हो गया है. ओके, बट डोंट वरी, इट इज फाइन. आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा अगर आपकी शुगर्स थोड़ी सी हाई लो ऐसे कुछ हो गया तो.
That is one thing that I have learned. I don't know medically whether it is okay or not. आज तक मुझे पता नहीं चला है, because when you have to breastfeed a child, you have to. If you wait for your sugars to come down, then might not happen. You might not want to wait that long. But in any case, what I felt was that you have to keep monitoring or keep a watch on your sugars. You may not have time to check your blood sugar also. So it is important कि आप CGM at least लगा दो. Especially postpartum में सिर्फ pregnancy तक delivery तक नहीं रखना है, उसके बाद भी रखना है. At least for the first 6 weeks till your body is going back to normal. फिर थोड़ा प्लेटो आने लगता है, and then वो जो ड्रॉप आप जो बहुत कंटिन्यूसली देख रहे हैं ना, वो धीरे धीरे कम शार्प रहते हैं. ओके, वो शार्पनेस विद विच इट ड्रॉप्स वो कम होते जाता है और थोड़ा प्लेटोइंग होने लगता है एंड शुगर्स नॉर्मलाइज होने लगती है. So generally we advise कि breastfeeding से पहले कुछ छोटा सा snack ले लो, so that post the feed or maybe while you're feeding you also eat something. Yes. That's a general advice that we generally tell the patients कि And so as to better prevent the to, post feed yes, and drop. better to drink something because you, it's difficult to eat, you know what, जो टाइम लगता है ना खाने में. I Yeah, mean, you want yeah, to save that also while you are right, nursing a small child. Yeah. right. Yes. So your basal requirement went down by almost 50%. नो, 1/3. सो जो मेरा पहले It का was one रिक्वायरमेंट third था ना of प्री प्रेगनेंसी. pre-pregnancy. हाँ, माय प्री प्रेगनेंसी जो मेरे रिक्वायरमेंट्स थे, इट वेंट बैक टू दैट एट आफ्टर अबाउट 6 weeks. जो फर्स्ट सिक्स Okay. वीक्स आफ्टर First डिलीवरी जो six था. weeks was even यस. lesser. Yes, it was much lesser. Okay, but after And 6 weeks, it went back to what it was when it was pre-pregnancy. Yes. your bolus, did you cut down on your boluses also? Yes, quite a lot. वो भी after 6 weeks, of course, it went back to what it was before. For the first six But weeks, you cut down first on the 6 weeks, boluses. I was hardly taking anything really. अगर मैं Okay. मेरा regular, you know, my if my pre-pregnancy doses were about 30 units a day, my pregnancy doses went up to about 80 units a day, and my first 6 weeks postpartum phase जो है, it came down to about say hardly 15 units, I would say. Okay. Yes, Okay. it came down to that low, yeah, and then Okay. of course High it went sugar. back to 230, So high yeah. sugar is not a contraindication. Henna has live examples. You can breastfeed your child even Yes. then. Hmm. Okay. Okay. So good. That was very insightful. And I think that is one of the most difficult phases of a woman with type 1 diabetes, even a normal woman, but especially when you have added, I don't know what should I say, advantage or disadvantage of type 1 diabetes. Okay. Uh, how did you, uh, what kind of blood sugar trends did you see during your 9 months? And how did you manage to stay on top of it? Hmm. So, like you mentioned, first 3 months mein you don't see much changes in your blood sugar. Okay. Most women, and I also went through it, nausea होता है, उल्टी जैसा होता है, खाने का मन नहीं करता है, all of those things I went through as well. बहुत tiredness feel होता है, weakness feel होती है. बट रिक्वायरमेंट्स इतने ज्यादा चेंज नहीं हुए, बट मुझे कम करने पड़े मेरे डोजेस बिकॉज मैं खा नहीं पा रही थी ज्यादा. तो मेरे एपेटाइट कम हो गई थी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट नॉजिया. सेकेंड टाइम अराउंड आई हैड वे मोर नॉजिया, एंड आई हैड वन चाइल्ड ऑलरेडी टू टेक केयर ऑफ, सो आई वाज लाइक कंप्लीटली स्पेंट. तो मेरे डोजेस भी ड्रॉप हो गए. सो फर्स्ट 3 months में यू कैन एक्सपेक्ट दैट, सो डोंट वरी इफ दैट हैपेंस. ओके, adjust your doses as per your how you're feeling and how your sugars look like. But that is my experience. In the second trimester, okay, जो golden time होता है वो, that is when you are glowing the most and you look very cute and everybody's asking and you are generally feeling very good. जो 4 to 6 months होता है, overall Estrogen you feel boost. very good. Yes. You feel like eating. First of all, nausea काफी कम हो जाता है, तो you start picking up your appetite. अभी बेबी भी जो है उसका मेजर डेवलपमेंट 3 months तक सब हो गया है. 20 month 20 week स्कैन में you can start seeing all the organs, this that. But so around after that, your appetite starts increasing because now the baby starts growing in size. You can see bump वगैरह, baby bump वगैरह दिख रहा है.
So your appetite has gone up, your doses will go up. Okay, it will be slowly at the start. It was for me, it was very gentle and everything. The the increase in blood sugars. So I of course increased my insulin doses also accordingly. But then I started seeing okay कि रेजिस्टेंस बढ़ने लग रहा था. वो मैं ले रही हूँ इंसुलिन पर नीचे नहीं आ रहा है. ओके, सो वो एक्सपीरियंस होने लगा बाय अराउंड फिफ्थ मंथ या सो. And of course, like I said, I knew what to expect. So there were also a lot of tips in that book that I read. So some of the tips, and actually these are tips whether you are pregnant or not, you still should follow these tips. I realized आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो फिर भी आप कर सकते हो. आपका सेंसिटिविटी है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेज करने के लिए, राइट? एज वी आर ऑल एडल्ट्स, सो वी are facing some or the other insulin resistance. So what I realized is start acting on these tips that you already know about. कि exercise करना है. Of course pregnancy है तो low intensity exercise like walk कर सकते हो, swim कर सकते हो. फिर basic आप simple things like आई थिंक पंप में हमें आदत छूट जाती है इंसुलिन पंप में कि खाने से है ना 15 मिनट पहले डोज लेना है. यस Lot of यस, pump users वो पंप में भी forget about रेकमेंडेड this. है. Exactly, हाँ, yes, but people tend to forget about it. आई नो, But आई नो. प्री बोलसिंग एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले आपका डोज लो. खाने से 45 मिनट्स पहले, 45 मिनट्स to 1 hour. A lot of my friends did that. जो इंसुलिन इंजेक्शन पे भी है, जो पंप पे भी है, 1 घंटे पहले इंसुलिन लेकर रखते हैं. ओके, बिकॉज वो जी, नीचे आते आते yes, टाइम लगता है. यू कम टू अ लेवल ऑफ अराउंड 80 और सो बिकॉज इट टेक्स टाइम टू कम डाउन. Okay, especially when you are starting to build resistance, I mean insulin resistance. फिर अदर थिंग्स लाइक खाने के बाद एक वॉक ले लो, छोटा सा 10 मिनट वॉक. आपने जैसे बताया स्प्लिट करो, फूड को स्प्लिट करो. ओके, डोंट हैव आपका मील जो है लंच है तो उसको 2 भाग में डिवाइड करके 2 घंटे के इसमें ले लो. Eat more protein, definitely. That is, वो तो without question, you have to add to your meals. It keeps you satiated for a long time. That's the only yes. reason why. And prevents hypos also. Yes, that too. Fiber ज़्यादा खाओ. One of the things which फिर finally last trimester आता है. Fiber मैं क्यों बोल रही हूँ? Because last trimester में really I was completely exhausted. uh, मुझे ऑनेस्टली खा जो वो गोल्डन पीरियड था ना 4 to 6 months वेर एवरीथिंग वाज फाइन, आई वाज एंजॉइंग द फूड दैट आई वाज ईटिंग, दैट बिकेम वेरी डिफरेंट. 7 to 9 months आई वाज स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ ईटिंग फूड. मैं खा नहीं पा रही थी ज्यादा बिकॉज द बेबी इज ग्रोइंग. मैं Puts खुद pressure इतनी, on the stomach. हाँ मैं खुद इतनी आई एम लाइक थोड़ा शॉर्ट हाइट वगैरह ये वो. सो मुझे ऐसा लग रहा था मैं जो खा रही हूँ वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ. ओके, एंड इट वाज द बेबी वाज पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑल द ऑर्गन्स, पूरे डाइजेशन के ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग. सो आई स्टार्टेड टुवर्ड्स द एंड आई developed hemorrhoids as well because I realized I was forcing myself to eat जबकि मुझे भूख नहीं लग रही है. मुझे continuously I was feeling full constantly. So then I changed my diet. Okay, fiber वगैरह ज्यादा आपको ऐड करना है in that case. So these small things. So my last trimester was little hard, honestly. Uh, but of course it came to an end. There is at the end there is a golden baby who is there in front of you. So once that, of course, the delivery happens, all that pressure and not wanting to eat those 3 months and sleeplessness and all the things that come with pregnancy. Breathlessness. Yeah. हाँ, restlessness जो होती है वो सब it comes to an end. So but insulin resistance I would say was the highest in the last trimester. However, जो लास्ट के जो वीक्स थे मेरे डिलीवरी से पहले, अबाउट आई वुड से 2 to 3 weeks बिफोर माई डिलीवरी, मेरा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस ना प्लेटो हो गया था. मेरे डोजेस Mhm. एक्चुअली ड्रॉप होने लगे थे धीरे धीरे. वेरी वेरी माइनर बट ड्रॉप होने लगे थे. इनफैक्ट आई वॉज लिटिल सरप्राइज एंड मैं डॉक्टर के पास भागी कि मेरे इंसुलिन डोजेस ड्रॉप हो रहे. मैं गायनेकोलॉजिस्ट को मैंने पूछा कि मेरे डोजेस ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? Is the Hmm. baby developing correctly? Because I didn't expect this to happen. And maybe I read about it, but I don't remember that. So the doctor explained कि नहीं वैसा होता है.
So then I was fine. Everything went smoothly after that. So last Baby's trimester fully is not. developed. So yeah. Correct, correct. Yes. So as Henna mentioned, second trimester onwards, your insulin doses will increase. Gradually, insulin resistance will set in, and you can't only rely on insulin. You have to make diet changes. You have to do exercise if your gynec allows you. Okay. So low intensity exercise actually are a very good solution to insulin resistance, and adding protein and fiber. Okay. So when you're managing type 1 diabetes in pregnancy, diet actually plays a center stage more than insulin. बिकॉज इंसुलिन का डोज तो बढ़ता ही है, पर सिर्फ वो बढ़ाने से कंट्रोल में नहीं आएगा. इट्स लाइक यूर गिविंग वाटर. पानी के जैसे आप इंसुलिन दे रहे हैं पर नहीं शुगर्स आती है. योर डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So you need to have that dietary management as well. Okay. And last question for you, Henna, which I think a lot of people might be having in their mind is that how did you manage your pregnancy related food cravings and at the same Yes. time blood sugars? Yeah, so that of course it's very hard because pregnancy में of course everybody will tell you जो आप crave कर रहे हो आप खाओ, you know, you feel like eating this, eat, you know, बिंदास खाओ, कुछ नहीं होगा, खाओ, baby के लिए खाओ. So you hear all these things around you, but you know आप type 1 diabetic को आपको मालूम है कि आप ऐसे कुछ भी मन में आया जो क्रेविंग आई उसको फुलफिल करने की, you know, अगर आप कोशिश कर रहे हो, जब आया, जब क्रेविंग आई, जब भी आप कोशिश कर रहे हो एंड यू गो हेड विद इट, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर योर ब्लड शुगर्स, राइट? Pay a price. एग्जैक्टली, देयर इज अ प्राइस टू पे. सो वो ऑफ कोर्स यू नो दैट एंड आई वुड नॉट से कि आपको मन मारना है कि नहीं मुझे तो डायबिटीज है तो मैं क्रेविंग्स आई कैन नॉट गिव इन. ओके, बट देयर इज अ सर्टेन प्लानिंग टू डू अराउंड इट. मूवीज में दिखाते हैं कि नहीं मुझे अभी का अभी, कोई प्रेग्नेंट औरत बोले कि नहीं मुझे अभी के अभी यही खाना है. ओके, एंड सब ये लेकर आ जाते हैं. बट यू नो अगर आपकी उस टाइम पे शुगर्स आर नॉट इन दैट रेंज जहाँ पर आप कुछ खा सको, और अगर आप खाओ तो वो यू नो 200 से सीधा 400 तक जाएगी, यू नो दैट विल हैपन. सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस to take that kind of risk. Of course it is a, you know, it's a very cute experience that happens in pregnancy, but it is important to let go of that and it is important to miss out on that. Okay, आप कुछ रह नहीं जाओगे. um you of course you have what you feel like having, but उसको planning करके खाओ. आपको आइसक्रीम खाने का मन है तो please plan for it. Okay, take that kind of insulin beforehand. Take that kind of you know steps afterwards कि okay ठीक है मैं ये अभी if I'm going to have a burger for example, right, so let me go take a walk, let me take the required doses according to that. Wait um half an hour. yes, wait half an hour. So lot of planning has to be there. So पूरी तरह से मन नहीं मानना है, but little bit of sacrificing will have to happen at your end. But that doesn't mean you know pull yourself down कि मुझे क्यों डायबिटीज है, मैं ये भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती. I think that's a very you know a little immature way to look at things. Now that you're going to be a mother, I think it's important to be mature about these things, you know. I see it that way. Yeah. Maybe achieving like a balance between Yes. giving in a little bit and then controlling a little bit. Correct. Correct. Yes. Something like that. Yeah. So I had cravings for one thing in one, you know, particular thing in one pregnancy, one other thing in the other pregnancy. So it was quite an experience, but it, you know, it got over. I actually enjoyed my food more, honestly, when the most I enjoyed was when I, once I delivered and I started the, you know, postpartum phase. And I'm like Nothing would raise your literally, sugar. yes, like nothing, you know, you are so hungry and the food you can eat because you're constantly burning calories. So continuously, you know, खाने मतलब भूख लग रही थी and I was just going on losing weight and I was eating so much and my sugars are dropping, my weight is, you know, going down and I'm going on eating. But I actually enjoyed that more than anything else. But cravings, I would say that
give in a little bit, try to manage a little bit. Yeah. Okay. So we've already actually finished an Yeah. hour, but we'll quickly just go through the questions. There are a lot of them. Yeah. Okay. Because of occasional glucose in urine also during pregnancy, UTI is common. Can you recommend anything? We already know about the hygiene. So if at all you're developing UTI during pregnancy, you have to take treatment from a gynecologist. I cannot recommend anything on this forum. Drink lots of water. That's all that I can recommend. Yeah. Actually, UTI is not common during pregnancy. I don't know where you got that idea from. Mm. Women are at a higher risk of UTI. Pregnancy में commonly होता है ऐसा कुछ नहीं है. So Anushree, here if I can weigh in, मेरी first pregnancy में maybe I was not that informed, or maybe I didn't have any experience before that. I did face some UTI towards the end of my pregnancy, but second pregnancy mein my sugars were way better controlled than my first pregnancy. So I did not face that. So I think अगर आप जितना हो सके आप मैनेज करते हो ब्लड शुगर्स, ग्लूकोज इन यूरिन जो आपने बोला है नहीं पास होने देते हो, कीटोन्स ग्लूकोज अगर नहीं होने देते हो, मतलब यू अगर आपका कैन, शुगर हाँ. 180 के अंदर रहेगा यस. तो यूरिन में पास नहीं होगा, इतना करेक्ट. याद रख. तो अगर आपका शुगर कंटिन्यूसली, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, है ना, या. कंटिन्यूसली अगर आपका शुगर 180 के अंदर रहेगा तो यूरिन में पास नहीं हो. तो आप सीजीएम लगाओ और मेक श्योर कि वो 180 ना क्रॉस करे. करेक्ट. राइट. बट it's not a common phenomena during pregnancy. All women at some point in their life will experience a UTI, but ठीक है. या. अ, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, बट बीपी और किडनी में भी प्रॉब्लम है. डॉक्टर बेबी के लिए ना बोल रहे. ओके, सो एज आई एक्सप्लेन्ड, अभी आपको कितना लेवल का प्रॉब्लम है वो मुझे मालूम नहीं है, पर अगर किडनी का आपका स्टेज 2 या स्टेज 3 है तो वो और प्रोग्रेस कर सकता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि जब भी प्रेग्नेंट होते हैं ना तो हमारी किडनीज पे स्ट्रेन आता है, बिकॉज दोनों मदर और बेबी का एक्सक्रीशन किडनी को करना पड़ता है. सो मे बी दैट इज वाई आपको डॉक्टर ने मना किया है टू हैव अ pregnancy. So it depends to what extent the problem is. अगर आप रिवर्स कर सके सक्सेसफुली एंड You can try. यस, देन अगर आप अप्रोच करते हैं डॉक्टर को रिवर्स करने के बाद, देन योर डॉक्टर में से दैट गो अहेड, नहीं तो आपको रिस्क बढ़ जाता है काफी आपके लिए. ओके, नेक्स्ट. Uh, so why don't you take this? या. What if सो we occasionally हाँ, have 200 200? शुगर्स ड्यूरिंग द डे. आपको कोशिश करनी है आपका टाइम इन रेंज जो है, ओके, 150 जो डॉक्टर ने कहा है, 140 150 के ऊपर नहीं जाना है. व्हाट इफ वी डोंट वांट टू सी व्हाट विल हैपन, राइट. आपको कोशिश करनी है, आपकी सारी मेहनत लगानी है ताकि आप वो 200 वगैरह नहीं पहुंचे. ओके, ये सेंसिटिव टाइम है, 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पोस्टमार्टम, ये सब एकदम सेंसिटिव टाइम है. यू हैव टू डू योर बेस्ट शॉट ओवर हियर. ओके, हमने रिस्क क्या होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग में. सो ऐसे मतलब of course I have also had sugars which have gone 200 and way beyond. Okay, I mean not beyond 250 or something. Occasional is fine. Yes, You वो look at the हुआ big है, picture. बट इन द डे सेम डे में आपको बीच बीच में 200 के वहां जा रही है नहीं, ओके है वो. आपका रेंज टाइट रखना है. अभी जैसे अभी नाउ आई एम नॉट, मैं अभी मेरा रेंज 140 का नहीं रखती हूँ. पोस्ट मील 140 का मेरा अभी रेंज नहीं है. मैं 150 160 तक रखती हूँ, या 180 मैक्स जाने देती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं जाने देती हूँ. पर जब भी मैं प्रेग्नेंट थी मैं 140 के ऊपर कोशिश करती थी, पूरी मेहनत लगाती थी 140 के ऊपर नहीं जाए. ओके, सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट. इट इज नहीं, इट्स नॉट गुड टू गो बियॉन्ड 200 ओकेजनली इन वन डे इटसेल्फ, या एवरी डे अगर आपका जा रहा है तो नहीं, दैट्स
you have to work on that. फिर आपने बोला है गुड हाइपो स्नैक्स. हाइपो स्नैक्स में हाइपो इट्स अ टिपिकल हाइपो मैनेजमेंट. आपको जो 15 ग्राम ऑफ शुगर लेना है, 70 के ऊपर वंस क्रॉस होता है आपका ब्लड शुगर, उसके बाद यू हैव टू, अगर वो नहीं होता है क्रॉस तो अगेन 15 मिनट्स बाद आपको 15 ग्राम ग्लूकोज लेना है, जब तक वो 70 के ऊपर नहीं जाए तब तक. फिर उसके बाद आपको हाइपो का स्नैक जो है, इट इज नॉर्मली अ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, ताकि आपको वापस ड्रॉप नहीं हो जाए. सो जो नॉर्मल हाइपो मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल होता है वो है. सम ऑफ द हाइपो स्नैक्स आर आपने रोटी खा ली, खाकरा खा लिया, एनीथिंग विच इज अराउंड 15 ग्राम्स एंड एक्ट्स फास्ट. नॉर्मली वी ऑल्सो रेकमेंड कि उसके साथ कुछ ऐसा प्रोटीन भी होना चाहिए, जैसे डेट्स के और चना का लड्डू है, ओके, जिस विल जो आपकी शुगर्स कंटिन्यूसली मेंटेन रख सके. सो दीज आर सम ऑफ द snacks that you can have. This one you can take, Yeah, Anushree. so actually, preeclampsia is a condition of high blood pressure during pregnancy, and you may get fits because of that. As a person with diabetes, you do have a higher risk, but more than sugar control, you have to monitor your blood pressure, okay, and manage your blood pressure. That you cannot do yourself, मतलब gynecologist की help से, that monitoring you have to do. So it's more related to the blood pressure, but yes, somebody with diabetes would be at a higher risk than somebody who doesn't have diabetes. Okay, so preeclampsia is a different condition, has to be managed accordingly. Hmm. Okay, so for So both, best yeah. insulin, yeah, Good. बोलो. So best No, no. insulin regimen, Good. I think ऐसा कुछ है नहीं. You have to go with whatever works for you the best. Okay. If required नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो हम लोग इंसुलिन चेंज करते हैं. मोस्ट इंसुलिन आर सेफ. If you're already taking Lantus or Glargine, you can continue it during pregnancy. बाकी ह्यूमन इंसुलिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड एनालॉग्स आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. देयर इज नो प्रॉब्लम. हाउ And टू how to, मैनेज इंसुलिन I'll रेजिस्टेंस, take आई थिंक that. वी Yeah. कवर्ड We've दिस. covered that. Fifth month onwards, insulin resistance आने ही लगता है. So, like I said, छोटे छोटे टिप्स है. Almost half an hour, 45 minutes पहले आपका बोलस इंसुलिन लीजिए. Okay, you see what works for you. Okay, किसी को 15 मिनट्स में भी इनफ हो जाता है, किसी के लिए 1 hour भी इनफ नहीं होता है. Try to take a walk after every big meal. Okay, even a 10-15 minute walk is good enough. फूड को स्प्लिट करने की कोशिश करिए, बड़े मील्स को. ओके, प्रोटीन की मात्रा इंक्रीज करिए. ओके, सो दैट योर शुगर स्टे मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. फाइबर इंक्रीज करिए. सो दीज आर सम वेज टू जनरली मैनेज इंसुलिन रेजिस्टेंस. आपको 5th month ऑनवर्ड्स आपको दिखने ही वाली है मोस्ट लाइकली. ओके, या. द नेक्स्ट वन कैन आई टेक. ड्यूरिंग डिलीवरी या अगर सी सेक्शन है तो डू दे अलाउ CGM? How to manage during labor pain, and what if we have to be nail by mouth? So I'll take the first part because I have not experienced labor pain. CGM is allowed in at least where I was. मैं जो हॉस्पिटल में थी, मैंने जैसे मैंने कहा पहले से ही डॉक्टर से बात करके रखी थी, CGM मेरे पास रहेगा. However, आई मस्ट से मेरे फर्स्ट डिलीवरी में मेरा CGM तभी, दिस वाज 6 years ago, मेरा जो रीडर था, फोन वगैरह अलाउड नहीं होता है वहां पर, तो मेरे पास जो रीडर था मैं वो ले गई थी. ओके, ऑपरेटिंग रूम में, ऑपरेशन थिएटर में. बट मेरे जो सेकेंड डिलीवरी में, सेम हॉस्पिटल, बट हॉस्पिटल के काफी सारे प्रोटोकॉल्स चेंज हो गए थे. एंड तभी मेरे पास रीडर था, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू टेक द रीडर अलोंग. ओके, बट एट द सेम टाइम, ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था ये सब चीजें डॉक्टर के साथ, मैंने पहले से ही एडमिट होने के टाइम पे जो डॉक्टर्स की टीम आती है, मिलती है, सो उनको मैंने बताया था कि मैं मेरा CGM ले जाना चाहती हूँ साथ में. तो उन्होंने मुझे अश्योर किया कि हम आपका ब्लड शुगर एवरी 20 minutes चेक करके देंगे आपको. सो आई सेड ओके, इफ यू आर गोइंग टू चेक माई ब्लड शुगर देन एंड देयर आप मेरे को रीडिंग बताओगे, वेल एंड गुड.
ओके, मैं मेरा पंप ले गई थी, पर मेरा सीजीएम मुझे अलाउड नहीं था, बिकॉज वो सेम हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल्स काफी चेंज हो गए थे बाय द टाइम मैं, मतलब 3 years लेटर मैं जब ही गई थी सेकेंड डिलीवरी के लिए। ओके, सो डिस्कस करिए, एंड देन डिफरेंट हॉस्पिटल Yeah, के अलग प्रोटोकॉल हो गए। they may not allow in the OT because of sterility issues and those करेक्ट। things. Every हम्म hospital will have their own protocol, हम्म। but they do monitor. The anesthetist यस। will monitor your blood sugar. या। And even if you're nil by mouth, the thing is कि sugars monitor करेंगे, sugar low जाएगा तो वो लोग IV में आपको glucose दे देंगे, and that's how they'll manage your sugars. करेक्ट। So you don't need to worry about it. सो आई डिड फेस दैट मेरे सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सेकेंड डिलीवरी में ही देयर वाज अ मोमेंट वेयर ऐसे लग रहा था कि शुगर्स अभी थोड़े ड्रॉप होने वाले हैं। ओके, 100 के आसपास, या आई थिंक 80 के आसपास चल रही थी मेरी शुगर्स। तो दे स्टार्टेड, मतलब आईवी तो चालू रहता They है start, बिकॉज यू आर yeah, गोइंग they add ऑपरेशन थिएटर। glucose. तो उसमें Yeah. थोड़ा, यस, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो इट विल पर सी हैपन। सेक्शन या। कैसा था, आधे घंटे का प्रोसीजर है, उससे यस। लंबा चलता नहीं है। तो करेक्ट। और तुमको वेटिंग रूम में तो सब अलाउड है, इट्स ओनली इनसाइड द OT, वो आधे घंटे के लिए दे माइट नॉट लेट यू टेक द फोन और समथिंग, हम्म। सो आई थिंक यू शुड बी ओके। Correct, correct. So what is the thing is that Anushri, if it is a planned C-section, or what I realized, अगर planned रहता है ना, पहले से advance में planning होती है, then it's fine. But if person is going through आई डू अग्री, normal delivery process, okay, the where it mind is can take, not हाँ, yeah, right, your 24 to mind is not 48 prepared for hours. these things. I यस agree. यस, हाँ, सो यू हैव टू डू प्लानिंग फॉर दैट इन एडवांस। ओके। Yes. हाँ, कि ये होगा तो कौन मेरा मैनेज करेगा, अगर आपका स्पाउस है साथ में, आपका फैमिली मेंबर है कोई Yes, जो आपके लिए मैनेज करेगा, सो ये सब पहले से प्लान करके रखे। agreed, I अनप्लान्ड सी agree. सेक्शन के लिए, प्लान्ड सी सेक्शन के लिए, एंड प्लान्ड लेबर, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल प्लान्ड, डिलीवरी हाँ, का इंड्यूस प्लानिंग भी डिलीवरी होना के चाहिए. लिए, एनीथिंग So वट as एवर soon इट as इज। I think, as soon as the ninth month sets in, these या। plannings should be done by you and your spouse with your Yes, doctor as a part of the team. correct. Okay, what test Next, can we do to test the babies? I don't know what this question means. I think that what it means I don't is, even know the answer because I'm not a हाँ, gynec. I'm sorry. no. So other than normal non-diabetic mother, so I think what I don't think you do this, anything extra for a person with diabetes. no, no. So Anushri, there were some tests Dr. Aspi had recommended, or rather, it is now done. It is a new protocol for all newborn children. It is not something to do with type 1 diabetic mother or not, but there are some हाँ, auto मतलब antibodies nothing जो check extra होती है, yeah, beyond. मतलब you don't do anything extra for somebody हाँ, uh, with diabetes. तो yes. Certain tests so are prescribed, वो जो छोटे बेबीज का जो प्रोटोकॉल होता है, बट फॉर अगर टाइप 1 डायबिटिक मदर है इसके लिए कोई टेस्ट होगा, ऐसे कोई है नहीं ऐसा कुछ फिलहाल। एक्स्ट्रा नहीं है, वो टेस्ट तो हम्म। होते हैं ना, वो करते ही है वो लोग जो मतलब डायबिटीज की वजह से कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं होता है। So और टाइप 1 डायबिटीज में हम कोई जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करते। so could also be referring to वो ट्रायल नेट जो है, which is based across the world। ट्रायल नेट तो प्रेगनेंसी हाँ, में नहीं होता है ना, वो तो सिबलिंग्स के लिए है। So करेक्ट, once हाँ। your baby is maybe every 5 years you do a So that's what antibody the person testing. may be asking about. No, they've written baby's genetic. So Okay, fine. I don't think there is any such test हाँ, for okay, genetic. And the trial net thing, let's not open that chapter. okay, fine, ठीक है। Uh, why don't you take this mental So, well-being? yeah. So, how can mental well being be effectively supported for a baby's parents and family members? Additionally, what roles can each individual play in maintaining a healthy and supportive environment? अगर आप फैमिली की बात कर रहे हो, दिस इज नीलाक्षी, राइट? हाँ, सो नीलाक्षी, आर यू टॉकिंग अबाउट द फैमिली members, what support they can? Yes, yes, Hinadi. Okay, Yeah. okay, okay. So, see, it is actually very case by case basis. I feel कि आपको
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फैमिली से कुछ छुपाना नहीं है. ओके, सबको बता के रखना है क्या होने वाला है, क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड सब लोग बोल रहे नहीं नहीं खाओ नहीं खाओ, खाना तो पड़ेगा, आप दो लोगों के लिए खा रहे हो, यू नो, these kind of things. So that if you prepare them in advance little bit, okay, see I'm going to face this issue now, अभी second trimester शुरू होने वाला है, please understand, don't force me to eat. Okay, I know, I mean, थोड़ा अपने तरफ से भी you have to make that effort in telling them, giving them the idea of what you are experiencing. Okay. In terms of a healthy environment, for anybody, whether a type 1 mother or not, for any new mother who is, I mean, any pregnant woman, a supportive environment is very very important. एंड ये जो सब आप सोशली आप फेस करोगे कि नहीं नहीं खाना है, नहीं खाना तो पड़ेगा, आप तो प्रेग्नेंट हो, ईट मोर. सो दैट यू हैव टू पुट योर फुट डाउन इन सम प्लेसेस, टेल देम दैट बॉस नहीं हो सकता हमारे से, आई कैन ओनली मैनेज सो मच. सो थोड़ा ओपनली यू हैव टू बी फोर्थ कमिंग अबाउट इट. ओके, बिकॉज इन दी एंड इट इज योर शुगर्स. आप किसी के प्रेशर में आके खाओ, कुछ ऐसी चीजें नहीं खा सकते जो आपको नहीं खानी है. All right, which you don't want to eat or you cannot eat so much, या आपने just insulin लिया है, you cannot eat right away, these kind of things. तो किसी के pressure में आके ये नहीं करना है. And this applies to, I would say, anybody with whether type 1 diabetes or not. You are starting a journey where you are going to give birth to a new life. So you are going to be responsible for that child. You will have a lot of pressure once that child is also born, where everyone will say that नहीं ऐसे करो बच्चों को, बच्चे को ऐसा करो वैसा करो. So वहाँ पर also you have to be very clear about these kind of things. So all mothers go through this phase, and we are not spared either. Okay, Hannah, ma'am, what were your Nilakshi? Is that okay? I hope it answers your question. Yes, ma'am. Yes, the. Okay, okay, thanks. Thank Next you. one, what were your HbA1c before and during pregnancy? Want to know? So in realistically, if you want to know, before pregnancy, so मैंने मेरा pump जो है ना, pump मैंने pregnancy के 4 साल पहले खरीदा, I mean start किया था use करना. Okay, and I of course I used the pump for quite a lot of things, because pump है ना एक ऐसी चीज है जो बोलते हैं ना आपको बहुत flexibility देती है. So ऐसी ऐसी चीजें, like I ran marathons, I did my career wise I was going forward. I did a lot of traveling, shadi, I mean lot of things happened in those 4 years before I got pregnant. So pump का बहुत अच्छा यूज रहा है मेरा. बट द रियल जो बोलते हैं ना वैल्यू जो पंप की निकली मेरे लिए, बेस्ट वैल्यू आई फील वाज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, बट दैट इज नॉट टू से के पंप के बिना प्रेगनेंसी आप नहीं, पंप इज द बेस्ट डिवाइस, ऐसा नहीं है. ओके, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो अच्छी अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसीज कंप्लीट कर चुके हैं, वो इंसुलिन इंजेक्शंस पे उन्होंने मैनेज किया है, ब्यूटिफुली मैनेज किया है. My HbA1c before using the pump was ranging in about 7.2 तक max होता था. During pregnancy, control got tighter. So मेरा जो HbA1c 6.5, 6.6, 6.7 तक ज़्यादा से ज़्यादा गया है during both my pregnancies. So, and I think I have gone to 6.2 also. 6.2 has been my lowest in during both the pregnancies. But 6.2 or 6.7 तक गया है realistically for me. Okay. In Like, case of yeah. C-section, Hmm. how long does the recovery take for the mother with type 1 diabetes? How long does healing of stitches take, and is it slow? So I think around it must have taken around 10 days for you, right? Yeah, 7 days
Yeah. That's the So usual yes, and it is 7 days not. they remove the stitches. Yes, yes, yes. And now there is no, like in my case, वो removing of stitches वगैरह नहीं था. It was those, dissolvable stitches. स्किन के भी नहीं निकाले थे, ऐसे ही जो बचे थे वो निकाले थे। कुछ भी नहीं निकाला था. It was just taped up. Okay. It was अच्छा, टेप adhesive. की। हाँ, ओके। हाँ. So, as a type 1, I didn't face any problem with the healing. Okay. My sugars were well maintained throughout pregnancies. Okay, pregnancy. Afterwards also they were pretty well maintained. In fact, I was dropping low a lot. So healing में मुझे कोई slow, कोई complication कुछ नहीं हुआ दोनों टाइम पे. So generally, as we mentioned earlier also, that your overall health does matter. Even your preconception health does matter. So if you have long-term good control of sugars, then healing usually is not affected, and it's a very smooth process. The internal healing also is not affected. Yeah, So I don't think that should be an issue if your overall health is good and your sugars are well maintained. yeah. So which pump you were using? That time I was using Medtronic 722. Both my pregnancies I've used that same pump. That is the most basic model of Medtronic. I don't think if it's available anymore. Next question is, I understand that you are a working mother. Did you take a break? Sorry, there is a message. Did you take a break from your work, or were you able to, so both my pregnancies I have worked till the end. First pregnancy mein I was working, of course. I work in the development sector, by the way. So first pregnancy mein I have worked till my delivery. I mean, just before delivery. And then I had a maternity leave of 6 months, but मैंने वो extend करके 7 months किया था, and that time actually COVID also started. So then after 7 months of, the baby being born, then I started working again. For my second pregnancy, soon as I conceived my second one, I was really, as in exhaustion वगैरह बहुत ज़्यादा था मुझे. And I then had to kind of, take a little bit of break. मुझे 2 महीने का break मुझे लेना पड़ा काम से. I discussed it with my employer. I worked with the Tata Group before. And once that time was gone, the first 2 months were done. Then I was feeling like myself again. And then I worked till about 2, 3 weeks before my second delivery. So I was able to work. I have traveled also a lot during my pregnancy also. I have, in fact, my second pregnancy, I was also studying. I was doing my executive MBA at that time. So I, in fact, had weekend classes रहती थी मुझे every 15 days. I had to. So I had just I used to drive myself during pregnancy, to office, to college, and everything. So it was quite hectic, but there were few things which were, to my advantage also. For example, COVID आया तो उस वजह से I started, like, entire office was working from home. So I got that big advantage. My first year of my executive MBA was online because of COVID. Okay, so certain things worked in my favor also. But yes, as soon as the second child came, I was done. I stopped everything. My course got done. My work, I finished. I wrapped up everything. I stopped working for at least a year and a half. After my second baby was born, I was at home just looking after 2 kids. And then as they grew a little older, my older one started going to school. He was in little higher grades and everything. Then I have now resumed work, and I'm working right now, though I'm working part time. So like I work half day only. So many things were in my favor, and it's tough, but uh, I think pump definitely helped me a lot. But I know a lot of mothers who are doing wonderfully well on insulin injections also. They are working, they have 1 or 2 kids, okay? Uh, but it is manageable. So I think whether or not type 1 diabetes hai ke nahi, it is manageable if
you work certain things out. Okay, next question, Anushree, for you, Dr. Anju Virmani. Ma'am has written, all women get UTI sometimes in their lives is not a fair. I agree, it's not a fair statement. Not all women get UTI sometimes in their life. That was just in the flow of things. Yeah. You said that generally during pregnancy, doctors recommend to give insulin via IV. Yeah, so if you're on the pump and they're insisting that they want to give IV, then you have to remove the pump. You can't take from the pump also an IV also. So sometimes if they want to, if you're going in for a C-section or during delivery, they may have a protocol and they may say that no, we are more comfortable giving IV insulin. We don't want you to use the pump. So then you don't do both the things. You either you take IV or you use the pump. So the advantage of IV is that it's in immediate acting. So you can take immediate decisions to adjust the doses to manage the sugars. The pump will take a little time to show an effect on the sugars. But as we've been saying that if your sugars overall are good now, you won't have a problem even during delivery. There'll be not too much of a fluctuation. So that is the key. And also to discuss beforehand, क्या करने वाले हैं? Say Yes. last moment, you Yes. should not get any surprises. That is for sure. Yes. That, oh my Yes. So God, if you're somebody is well going to take my prepared pump as away. Yeah, you should discuss this much in advance. The day you are admitting yourself or before the admission also, beforehand, you should discuss this with your gynecologist for sure. as to how they're going to manage your diabetes. Yeah. Uh, in case the type 1 diabetic patient in her 30s is now facing certain neuropathy symptoms, is it of any concern during pregnancy? So if you're getting numbness during hypos, that is not a neuropathy symptom. That is a symptom of low blood sugar. Okay. But if you're getting numbness otherwise, then you should get a complete checkup done and make sure that you don't have any other complications. Because as I mentioned earlier, that if you have any kind of retinopathy or microalbuminuria, you should try to first reverse those and then plan a pregnancy, if possible, as far as possible. Because normally complications also coexist along with each other. Yes, Yeah. yes. So if Yeah. you have neuropathy, you may be having other Yeah. complications. Hmm. So I would suggest that this is not something that we can discuss on this forum. You get a complete checkup done and discuss with your doctor on a personal basis based on your particular case. Yeah. So I think there's one last question. Did you take ghee that our grandmother tells us in final trimester? No, I did not do that. It is fine to take it, but honestly, my final trimesters both times were very hard. I was doing a lot of things. I was studying, I was working the second time around though. So, and in my first pregnancy, of course, since you want to try out everything that your elders are saying, you want to try it, but it didn't work for me. I did try taking the that panchamrut and everything, but I realized it was giving me so much bloating and so much uneasiness and so much indigestion. I, like I said, I had hemorrhoids towards the ends. I was in so much pain because food, I was not able to digest food. It just wasn't happening for me. So I discontinued all that. I tried for maybe 2 3 4 days or something, but it just didn't work for me. So listen to your body. I think that is more important. If our grandmother has said to say take ghee, you have to see the lifestyle that we are leading today. We are not leading the lifestyles that our grandmothers lived at that time. Women at that time, they would say that हम तो पोछा लगा देते थे पूरा घर का. Just before delivery I did this work, I was standing here on somewhere cleaning this. But we are not living that kind of lifestyle anymore. We are not doing that kind of hard work anymore, right? So watch out for these things, see what works for you. I did follow a lot of postpartum diet though. My mother had made some special laddus for me.
And luckily for me, they were very tasty. And I was constantly going low. So those laddus were a life savior for me because they were, nice, and like I needed that kind of food at that time. There were a few things that she had made which couldn't I just couldn't handle, like some adrak ke laddu or something. I just couldn't handle that. It was giving me a lot of acidity, so I skipped that. But pretty much all the other postpartum diet that my mother recommended or passed on to me, I followed and I saw the benefits of that. Okay, but again, at the same time, like I said, I was on a postpartum phase. So your sugars are dropping low, you're burning calories. So you don't feel the effects of that much. You're losing weight, so you will not feel that. But once you plateau on the breastfeeding phase, or you slow down on the breastfeeding, right? Or you discontinue breastfeeding after whatsoever number of months, if you follow the same diet, postpartum diet that you started following as soon as you delivered, then you are going to see some major effects of that. Like you will suddenly gain weight, and which I did when after my first pregnancy. I started losing weight after my delivery. I was breastfeeding my first child for at least, I breastfed him for about 1 year, 6 months, 8 months, or 6 months or so. But as soon as I stopped, because my diet was the same, my food was the same, I started gaining weight, and I gained a lot of weight. So by the time I got pregnant the second time, I had gained quite a bit of weight. So my gynecologist was also very surprised, and he really like gave me a scolding. How did you start this now? Why are you starting this pregnancy with so much weight? But thanks to that, my second pregnancy, I knew what to expect. Now, in here, I was knowledgeable. I didn't know that I will start gaining weight when I stopped breastfeeding. So, in my second pregnancy, and the second time I stopped breastfeeding, okay, at that time, I made sure that I don't make the same mistakes. And I actually did not gain any more weight after I stopped breastfeeding. I continued to lose weight, continued, and in a very healthy manner. Now, in fact, my younger one is 3 years old, and I have gone back to the weight which I was when I got married. So I think we have to be mindful of these, things in particular. What we eat and what customs say, what elder people tell you. So use your own brain also over there is what I would recommend. Yeah, do what works for you. Yeah. Perfect. By the way, Henna's got very adorable kids, very cute kids, and very well behaved kids as well. So, but thank you As very everything much, now. Anushree, Henna, for giving out so much of time and solving all the queries and giving all the answers. Thank you very much for being here. It was a wonderful session. Thank you. Thank you, everyone. Thanks. Thank you, Vaishali Didi. Thanks, Anushri. Thanks, all of you, for Thank listening you, in. everyone. Yeah, it was a And very all the niche best. crowd. I'm very Yeah. happy that Mhm. it was a very small crowd and we could interact well. Yeah. Great. Okay. Thank you. Good Okay, night. Bye. Have a very good goodbye. Bye. night. Bye.